Hello everyone, I'm your Vishal Chavda, back again with our new topic of class 12th. In our previous video, we were start with our new chapter, current electricity. So this is the third part of our next this chapter, current electricity. Now starting with this topic, EMF, internal resistance and terminal potential difference. So the first is EMF. What is EMF? It's the maximum potential difference between the two electrode of the cell. हाँ जी, दो electrode ਹੁੰਦੇ ਨੇ cell ਦੇ, positive and negative. ਉਹਨਾਂ ਦੇ between ਜਿਹੜੀ maximum potential difference ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ potential difference ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? EMF ਬੋਲਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. It's a type of force. Next is internal resistance. It is defined as resistance offered by electrolyte or electrode. This electrode, resistance कौन offer करेगा? Electrode या कोई electrolyte of the cell, passage of electric current through it. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ current pass ਹੋਏਗਾ. Next आ गई terminal velocity या terminal potential difference. It is defined as potential difference between two electrode of the cell in closed circuit. So there are three definitions. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ EMF ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਫਸਟਲੀ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, here is cell, there is a small resistance and it is a large resistance. पॉजिटिव नेगेटिव करंट फ्लो कर रहे हैं. ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो यदि कोई ना कोई पोटेंशियल होगी, सपोज आप लिख ले लो पोटेंशियल डिफरेंस, नेट पोटेंशियल डिफरेंस. सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल जी सर्किट में गई पोटेंशियल इन सर्किट एंड प्लस जो पोटेंशियल लॉस हुई तो आप लिख देंगे पोटेंशियल लॉस. सो सपोज इतने 6 वोल्ट की बैटरी है, इन्हें कितना मैटर किया सर्किट दे विच 5.8 वोल्ट. दैट मींस 0.2 वोल्ट का कितना कितने लॉस होया. दिस इज कॉल्ड स्मॉल आर. सो 6 वोल्ट इज इक्वल्स टू 5.8 वोल्ट प्लस जेड़ा लॉस होया वो लिख लिया आप 0.2 वोल्ट. सो नाउ दिस इज द EMF, total potential difference between the two electrodes when no current is flow. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 5.8 ਵੋਲਟ. ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ. ਇਹ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਮੀਨਲ potential difference. And here this is also potential difference, but some are acquired by this resistance is called internal resistance. So EMF is equals to हाजी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? IR. कुछ ना कुछ लॉस हुआ है भी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ऊपर लिख लेंगे IR. दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. सो EMF इज इक्वल्स टू IR पर बाहर कर ली R प्लस R. दिस इज द टोटल EMF in the circuit. So this is terminal velocity, terminal potential difference, and this is the product of करंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस ने की किया कुछ करंट या कुछ पोटेंशियल डिफरेंस नु की कर लिया, रेजिस्ट कर लिया, जिन्हों की कहता ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ बैटरी लॉस कहता 0.2 वोल्ट. इस एग्जांपल ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. सो सेल्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੇ. सपोज two cells are connected in series or parallel. So firstly we will discuss the two cells are connected in series. So the negative terminal of one cell is connected to positive terminal of other cell. So these are connected in series, and here it is a point A, B, C. So इन्होंने EMF होगी अपनी I1, E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2. ठीक है जी. करंट अपना फ्लो कर रहे I करंट
we have to find the potential difference between A and C. So firstly the potential difference between A B, हाँ जी इस दो पॉइंट्स के विचाले पोटेंशियल डिफरेंस कितना होएगा VA माइनस VB। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ EMF ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਲਸ ਕਰੰਟ ਇਨਟੂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਇਥੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ EMF ਮਾਈਨਸ IR। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ VA ਮਾਈਨਸ VB इज इक्वल टू, तो फर्स्टली देखो EMF कितनी है अपनी E1 माइनस I of R1। so this is equation number 1। similarly potential difference between the points B and C, so VB minus VC, so इधर आ जाएगा अपने को E2 minus I of R2। this is equation number 2। now we have to find the potential difference between these points A and C, so V of AC, तो ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ VA minus VC। suppose ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ VB ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ VB ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ VA minus VB, VA minus VB, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਇਧਰੋਂ ਕੀ ਰਹੇਗਾ VB minus VC plus VB minus VC। so use equation 1 and 2 in this equation, so we have to देखो ध्यान ਨਾਲ इधर आ जाएगा अपने को सॉल्व होके VB minus VC, so VA minus VB की वैल्यू कितनी है जी अपनी E1 minus I of R1 and next E2 minus I of R2। so E1 plus E2 अलग कर ले जी अपन minus I कॉमन R1 plus R2 अलग तो कर लिया तो अपने को जी पोटेंशियल डिफरेंस आ गई जी नेट पोटेंशियल बिटवीन A and C। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ E of equivalent minus R of equivalent। ਤਾਂ E equivalent ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ equivalent EMF कितनी आई E1 plus E2 and equivalent resistance कितनी आई सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ equivalent resistance ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ R1 plus R2। so this is the potential difference between two group of cells, one cell and two cell. The positive terminal of one cell is connected to negative terminal of other cell. This is the grouping of cells in series। now we can proceed with our next topic, two cells in parallel। now the next topic is when two cells are connected in parallel condition। so there are two cells and the 2 points, suppose इन्हों नाम देता अपन B1 इन्हों नाम देता अपन B2। इधर EMF आ गई E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। सो दो पाथ आ गए पैरेलल दे विच पता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा I, बट करंट की हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट। so we have to find the value of current। the net current is I1 plus I2, so we have to find the current। so firstly in equation B1 to B2 we have to find potential difference B1 B2 according to path 1। so इधर आ जाएगा जी अपने को E1 minus I of R1, this is equation number 1। and now VB 1 to B2 according to path 2 from this path E2 minus I of R2, this is equation number 2। here it is E1 and I2, दो अलग अलग करंट ने अपने को पोटेंशियल डिफरेंस अपन ਨੂੰ बोथ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੈ। तो फर्स्टली इथों ਆਪਾਂ वैल्यू ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ I1 ਦੀ ਇਥੋਂ वैल्यू ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ I2। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ V ਹੈ ਤਾਂ V E1 minus I1 R1 ਤੇ ਤੋਂ I1 ਦੀ वैल्यू ਕੀ ਆਏਗੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ I1 R1 is equals to E1 minus V, R1 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो I1 की वैल्यू आ गई E1 minus V upon R1, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली I2 आ जाएगा जी ਤੁਹਾਡਾ सॉल्व होके E2 minus V upon R2, इक्वेशन नंबर 4। so put the value of 3 and 4 in that equation, I is equals to I1 plus I2। so I की वैल्यू की आ जाएगी अपने को E2 minus V upon R1 and plus E2 minus V upon
R2. Now the LCM is R1 and R2. Multiply with both the sides and equate the equations. So now we can write here E2 upon R1 V upon R1 plus E2 upon R2 minus V upon R2. So V वाली अलग कर लो, EMF वाली नो अलग कर लो. देखो जी I आ जाएगी अपने को E1 पर E1 आएगा थे, हाँ जी, E1 अपॉन R1 प्लस E2 बाय R2, एक ब्रैकेट होगी, माइनस V कॉमन आ गया, अंदर क्या आ जाएगा जी अपने को 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, जी नहीं बनेगा 1 बाय R1 1 बाय R2. सो इधर एलसीएम आ गया अपने को, बन गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 मल्टीप्लाई R2. इधर भी आ जाएगा अपने को R1 R2, ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2. सो आपको फाइंड की करनी है पोटेंशियल डिफरेंस, उन्हें उधर ले जाओ, आई नो इधर ले आओ, तो अपने को बन गया V. हाँ जी, जो ये टर्म इधर आएगी तो अपने को पॉजिटिव हो जाएगी. नाउ इधर आ जाएगा अपने को E1 R2 प्लस E2 R1 मल्टीप्लाई R2 एंड इधर आ जाएगा जी I दी माइनस I. सो जो फंक्शन है आ वाला नीचे वाला मल्टीप्लाई होएगा, इधर वाला डिवाइड होएगा, तो अपने को V आ जाएगा जी सॉल्व होके. जो आ फंक्शन ने इधर गया था मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया, तो अपने को बन गया E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2. In there R1 multiply R2 divided by R1 plus R2. So from that equation we have to put the values. So this is the equivalent EMF and I, and this is the equivalent resistance. So we have to write EQ minus I of minus I of R equivalent. Where it is E equivalent and R equivalent, we have to write. हाँ जी, फ्रॉम दैट इक्वेशन तो E इक्विवेलेंट क्या आएगी अपने को, इक्विवेलेंट EMF कितनी आ गई अपने को E1 R2 माइन प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, वेयर R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई अपने को R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. सो इधर रेसिप्रोकल ले लो जी, तो अपने को आ जाएगा 1 अपॉन रेजिस्टेंस, इधर आ जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2. सो मल्टीप्लाई R1 R2, हाँ जी, एंड R2 अपॉन R1 R2. तो कैंसिल होकर की बनेगा अपने को 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन the two cells are connected in parallel. So जो पैरेलल कनेक्ट कर दे दो रेजिस्टेंस ਨੂੰ, ਤਾਂ रेजिस्टेंस ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ. ਤੇ this is the combination of two cells in series and parallel of their potential difference. So now our next topic is heating effect of electric current. So ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਮ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੌਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਔਰ ਜੂਲ law of heating. Whenever electric current pass through any conductor, after some time it becomes hot is called heating effect of electric current. Actually which ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, suppose ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੰਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਨੂੰ, suppose ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੈਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੰਟ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੰਟ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, suppose rotating the fans blades of fan, so ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, remaining current changes into its kinetic energy and it produces heat. So this ਦਾ ਜਿਹੜਾ appliances ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, hot ਹੋ ਜਾਏਗਾ, heat produce ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ heating effect of electric current. So ਇਹਦਾ cause ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ heating effect ਦਾ, then ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ expression ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ. ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, suppose ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰੰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਟੂ
positive terminal, मतलब opposite to the electric field. So it gains a kinetic energy. At that time ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੋਲੀਜਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। Now we can express with this expression. So we know that I is equals to Q by T. So from there Q is equals to IT. This is equation number 1. Heating effect means to say energy. So H is equals to work done, is known as energy, and we know that work done is equal to potential difference into charge. So put the value of Q here, the V I T. This is the equation for H. From according to Ohm's law, V is equals to I here. Put the value of I here. So I square R into T. This is also known as heating effect. Or I is equals to V by R. Again put the value of I here. H is equals to V square upon R into T. There are 3 equations for heating effect of electric current. This is in the joule, but when we change into calorie, so I square RT divided by 4.2. So this is changed into calories. Heat changes into calories. This is called heating effect of electric current. Now the next topic is electric power. So power is rate at which electric work is done by the source of EMF in maintaining the electric current in electric circuit. Means to say electric circuit ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਾਵਰ। So power is equals to work done upon time. And what is the units of power? Power is measured in watt and joule per second. Watt is equal to joule per second. So we know that work done is equal to VQ and I is equals to Q by T. So put the value of work done in this equation. So अपने को आ गया VQ, हाँ जी, divided by T. So Q by T की अपने को आया, तो P कितना आ गया जी, VI. So this is the one equation for power. Now according to Ohm's law, V is equals to IR. Put the value of VIR. So power is equals to I square R, and now I is equals to P by R. So the third equation for power is V square by R. So there are the 3 equations for electric power, and the unit is watt, joule per second, or also known as volt, ampere. There are number of units for power, but the most widely used is watt. Clear है जी, electric power. हाँ जी, नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रिक एनर्जी। अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। तो यूनिट्स की होती है, वो होती है जी किलोवाट आवर। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। मतलब किन्ने पावर दी जेडी अप्लायंस दा कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, हाउ मच टाइम दे वर्क, हाउ मच टाइम दे वर्क, मतलब कितना टाइम उन्हें की कितना काम किया, तो कितनी एनर्जी की करेगा वो कंज्यूम करेगा, उन्होंने की कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर मल्टीप्लाई टाइम। सो 1 किलोवाट आवर मींस टू से एक कमर्शियल जेडी यूनिट है, इनको 1 कमर्शियल यूनिट कहते हैं। 1 कमर्शियल यूनिट इज इक्वल्स टू 1000 वाट मल्टीप्लाई 1 आवर। मतलब 1 किलोवाट आवर कदों होएगा जदों 1000 वाट पावर 1 घंटे 1 घंटा की करेगी काम करेगी, उस टाइम पे 1 किलोवाट आवर एनर्जी की होएगी कंज्यूम होएगी। मतलब 1 यूनिट कंज्यूम होएगी जदों 1000 वाट दी कोई अप्लायंसेस 1 घंटा की करेगी वर्क करेगी, उस टाइम पे एक कमर्शियल यूनिट की करना उन्हें कंज्यूम करना, इस अकॉर्डिंग अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोड्यूस होता है। Now last topic discussed with this example, a bulb of 100 watt is operating 6 hours per day।
सो देखो पावर कितनी है अपने को 100 वाट। कितना टाइम चल रहा है 6 घंटे। 6 घंटे एक दिन चल रहा है जी। तो ਆਪਾਂ ਕੀ फाइंड करना एनर्जी फाइंड करनी है 7 डेज ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब 7 डेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਲਸੋ फाइंड ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ एनर्जी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 100 into 6 टोटल एनर्जी आ रही है पर आप 7 डेज की करनी है मल्टीप्लाई बाय 7 7 6 42 4200 so this is the watt hour we know that one commercial unit is in kilowatt hour तो चेंज कर दो जी किलोवाट आवर ਨੂੰ डिवाइडेड बाय 1000 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 4.2 किलोवाट आवर और 4.2 units so 1 unit is equals to how much rupees 4 rupees so 4.2 unit is equals to 4.2 into 4 so decimal 4 to the 8 4 4 the 16 divided by 10 so 16.8 rupees this is the total bill for this power so this energy consumed by this appliances in 6 hour per day or in 7 days ठीक है जी। तो अपन गिवन की सी कोई बल्ब है 100 वाट ਦਾ 6 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 7 ਦਿਨ ਉਹ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹਾਊ ਮਚ ਬਿੱਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ 4 ਰੁਪਏ ਹੈ ਸੋ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟਸ ਕਿੰਨੇ ਆਏ 4.2 ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਰੇਟ 4 ਰੁਪਏ ਹੈ 4. ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 4.2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 4 so 16.8 rupees is the total bill for this consumption so ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ ਪਾਵਰ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਔਰ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸੈਲਸ ਸੋ ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ